Hello everyone. So welcome to the Fundamental Rights series. So today is lecture 3. So in this lecture we are going to start again with the fundamental rights. So till lecture 2 we have discussed till article 18 clause 3, and from today we are going to start with article 19. Okay. So let's begin with article 19. So what is article 19? Let me just tell you. Okay. So Article 19, so basically it guarantees six fundamental right or freedom, you can say, to the citizen of India. So Article 19 is what? So basically it guarantees six fundamental freedom to citizen of India. And what are those six fundamental freedom, you can say? What are those six fundamental rights? So that is freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of forming association. It can be political association, it can be trade union. One by one we will see. Okay, because under Article 19 there are different clause and subclause under which these all freedoms are given. So we will see one by one. But first let's see what are those six fundamental freedoms that is guaranteed under Article 19. So freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of association, freedom of movement, throughout the India. There should be no restriction. Then freedom of residence and profession. Okay, so these are the six fundamental freedom which is guaranteed under Article 19. Okay, so one by one we will see. So under Article 19 clause 1 subclause A. Okay, so under Article 19 clause 1 subclause A guarantees all the citizen for the right to speech and expression. So under this speech and expression is guaranteed under Article 19 clause 1 subclause A. Okay, so I will write here to all citizen guarantees to all citizen right to speech and expression. So Article 19 clause 1 subclause A, and with this what Supreme Court has told regarding this Article 19 clause 1 subclause A. Supreme Court has held that right under Article 19 clause 1 subclause A. Okay, Supreme Court what SC has held. So SC held that right under Article 19 clause 1 subclause A is a fundamental part of right to life. It is a fundamental part of right to life under Article 21. Okay, so सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला that Article 19 clause 1 subclause A, it is a fundamental part. Fundamental part क्यों? क्योंकि अब suppose you have the right to life, but you cannot freely express your views. You cannot freely speech about anything. You cannot freely speak regarding anything. Okay, जैसे suppose अभी recently क्या हुआ? We have seen in Delhi, in Karol Bagh, that there was an incident. अब उस इंसिडेंट को लेके इफ पीपल डू नॉट हैव द फ्रीडम टू स्पीक, तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21? So therefore Supreme Court has held that Article 19 subclause A, it is a fundamental part of right to life under Article 21. So therefore a freedom of speech and expression, ये क्या इंक्लूड करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड freedom to express, okay,
किसी भी मैटर, कोई भी मैटर, उस पर आप खुल के आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने व्यू को. एक्सप्रेस द व्यू, इंक्लूड एक्सप्रेस द व्यू एंड ओपिनियन ऑफ अदर्स, एंड ओपिनियन ऑफ others. Okay, so freedom of speech and expression include uh, freedom of speech and expression include freedom to express the view. आप खुल के अपने व्यू को, विचार को प्रकट कर सकते हैं. फ्रीडम टू एक्सप्रेस द व्यू एंड ओपिनियंस ऑफ अदर. और इसी, ये जो चीज है, दिस थिंग विच लिंक्स दिस थिंग लिंक्स टू फ्रीडम ऑफ प्रेस. ओके, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इज सिंपली जस्ट एक्सप्रेसिंग द व्यू, द ओपिनियंस ऑफ अदर. जैसे हम लोग देखते हैं हमेशा अपने टीवी चैनल्स पे, देयर आर सम डिबेट हैपनिंग इनसाइड द टीवी चैनल्स ऑन सम न्यूज चैनल. सो व्हाट इज दैट? सो दे आर expressing their view on some topic, like budget has come. तो बजट पे क्या है, लोग वहां पे जाएंगे, they will sit and they will express the view whether the budget is good or not, whether it is bad, even they are speaking against the government. So that fundamental right is given under article 19 clause 1 sub clause A. Okay, but अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन, या फिर लोग कुछ भी कह सकते हैं? तो इफ पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग एनीथिंग विच इज नॉट करेक्ट, और यू कैन से फॉल्स न्यूज को फैला देना, प्रोपेगेंडा चला देना, राइट? सो आर्टिकल 19 क्लॉज ए, it gives complete freedom of speech and expression. Is there any restriction on that or not? So yes, there is restriction on freedom of speech and expression, which is under article 19 clause 2. Okay, so I will write here, I will mention freedom of speech. So for speech I will use the term as freedom of speech and expression. E for expression is restricted under article 19 clause 2. तो 19 clause 1 सब clause A में क्या है? freedom of speech and expression. And Supreme Court what has held? Supreme Court has held that freedom of speech and expression is a fundamental part of right to life under Article 21. Freedom of speech and expression include freedom of express the view and opinions of other, which links to freedom of press. But freedom of speech and expression is not completely absolute, you can say. There are restrictions which is mentioned under Article 19 clause 2. And what are the grounds? What are the grounds for the restriction? So grounds for the restriction is, you can say, grounds of security. If there is some, you can say there is some problem going within the country, okay, or suppose Manipur incident, or suppose there is some riots going on in any cities. So there, the freedom of speech and expression can be restricted. Okay, so on the grounds of security and sovereignty of India, sorry, security and sovereignty of India. Okay, then morality, decency. So these are the grounds. Okay, so these are the grounds under which freedom of speech and expression can be restricted on maintaining, you can say, on maintaining public order. जैसे मैंने अभी बताया कि suppose riots going inside the city, some city. So there can be freedom of restriction on freedom of speech and restriction. Then maintenance of friendly relation, maintenance of friendly relation with other countries. Okay, अब suppose in future क्या हो, we are going to make some friendly relation with Pakistan or China. अभी क्या है, अभी हम लोग खुल के अपोज करते हैं that Pakistan is this, that Pakistan is that China is this, China is that. But in case in future when things goes like India and their neighboring country like Pakistan and China started maintaining their relationship, they agree that we should make peace in our neighborhood so that we can all go, we can all develop ourselves. So in that purpose, like right now people is telling anything regarding Pakistan and China, there is no restriction. But in future, if that's come, there can be restriction that people cannot openly
criticize or say anything regarding the Pakistan or China or maybe some other countries. Okay, so maintenance of friendly relation with other countries and content of court. Okay, so these are the grounds on which fundamental right, that is freedom of speech and expression, can be restricted under Article 19 Clause 2. Okay, so this is what Article 19 Clause 1 subclause A. अब freedom of assemble right जो assembly करने का है, under which article it is guaranteed? So it is guaranteed under Article 19 Clause 1 subclause B. Okay, so we will see what is this Article 19. Article 19 Clause 1 subclause B. Okay, so Article 19 Clause 1 subclause B, what it guarantees? So it guarantees right to assemble to all citizens. Okay, so it guarantees right to assemble to all citizens. Okay, and it includes holding meeting or carry out procession, but it should be in a peaceful manner. So to all citizens, including holding meetings. ओके, तो एक जगह पे इकट्ठे होकर हम लोग मीटिंग भी हेल्ड कर सकते हैं या कोई प्रोसेशन कैरी कर सकते हैं. ओके, राइट, लाइक प्रोटेस्ट हम लोग कैरी कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन अ पीसफुल मैनर. ओके, इट शुड बी इन अ पीसफुल मैनर, इट शुड नॉट बी इन अ वैलेंट मैनर कि हम लोग असेंबल होके वी आर डिस्ट्रक्टिंग द थिंग्स, डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक property, you can say. Okay, so we cannot do that. We can assemble, we can hold protests, we can hold meetings, but it should be in a peaceful matter. So this is what Article 19 Clause 1 subclause B. Now we will see another Article 19, Article 19 Clause 1 subclause C. So Article 19 Clause 1 subclause A guarantees freedom of speech and expression. 19 Clause 1 subclause B guarantees right to assemble. 19 Clause 1 Clause C, what it guarantees? So it guarantees to all the citizen right to form association. Okay, so हमने देखा कि 6 फंडामेंटल हमें 19 के अंदर मिलता है. सो राइट टू एसोसिएशन, फॉर्म एसोसिएशन किस आर्टिकल में है? सो इट इज इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें गारंटी करता है कि यू कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ एसोसिएशन विच इंक्लूड पॉलिटिकल एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन और इवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ओके, so I will write here, it guarantees, what it guarantees? It guarantees to all citizen the right, okay, the right to form association, okay, of any type. किसी भी तरह का आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एसोसिएशन. ओके, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, और कोऑपरेटिव सोसाइटी कब ऐड किया गया? सो इनिशियली कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेर नॉट एडेड, इट वाज added, it was introduced through 97th Amendment Act. Okay, 97th Amendment Act. So this can be asked in prelims, that through which Amendment Act cooperative society was introduced. So it was introduced through 97th Amendment Act 2011. Okay, now here you might have this question that there is fundamental rights to form trade union. So it implies that it is a fundamental right to strike. अब ट्रेड यूनियन जहां बनते हैं तो if there is problem inside that company or that manufacturing unit, अब ट्रेड यूनियन कहाँ होते हैं? Mostly in the manufacturing sector. Okay, mostly in the manufacturing, there might be some other places also, but mostly in the manufacturing sector. तो हम लोग देखते हैं कि ट्रेड यूनियन होते हैं, अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पे चल जाते हैं. और यहाँ पे 19 clause 1 सब clause 8 is guarantee that fundamental right to form trade union. So it means, it implies that right to strike is also a fundamental right. So no, right to form trade union, it does not imply a fundamental right to strike. Okay, so right to strike may be a legal right, but it is not a fundamental right. Okay, so मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, is
right to strike a fundamental right? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, it is not. Or simply we can write here, or simply we can write in this manner, कि right to form trade union, I am denoting it as TU, right to form trade union does not imply a fundamental right to strike. It does not imply fundamental right to strike. Right to strike, okay, right to strike may be a legal right. Legal right हो सकता है, but not fundamental right. तो ये चीज हमें ध्यान रखना. It might be asked in interview or means this kind of question कि whether right to strike is also a fundamental right. So no, right to form trade union is a fundamental right, but it does not imply that right to strike is a fundamental right. Right to strike might be a or maybe a legal right, but it is not a fundamental right. Okay, so this is what Article 19, Clause 1, Subclause C. Okay, now Article 19, Clause 1, Subclause D. Okay, so we will see what is this Article 19, Clause 1, Subclause D. So it is like we have the 6 fundamental freedom. So 3 fundamental freedom we have said, fundamental right to speech and expression, fundamental right to form trade union, right? Fundamental right to assemble, right? So 3 we have seen, and the fourth one what it will be? So fundamental right to move freely throughout the India. मतलब India के अंदर में we can move anywhere. Suppose I am living in Delhi right now. Okay, so I can go to Karnataka, I can go to Tamil Nadu, I can go to J&K. So we can move freely throughout the country, and this right is guaranteed under Article 19, Clause 1, Subclause D. So I will write here. Okay, so Article 19, Subclause D guarantees to all citizens a fundamental right to move freely throughout India. Okay. Okay, that is, no part of India shall be made inaccessible to any citizen. So that is what Article 19, Clause 1, Subclause D. And then the fifth one, Article 19, Clause 1, Subclause E. What is it? So simply, it is a fundamental right given to all citizens of residence and settlement. मतलब आप किसी भी पार्ट में किसी भी जगह पे आप अपना रेसिडेंस बना के आप सेटल कर सकते हो. Okay. So guarantees to all citizens fundamental right of residence and settlement. Okay, so this is what Article 19, Subclause E. Okay, so till now we have studied all the 5 fundamental rights which is guaranteed under this. Okay, and then we will see some more article. Okay, so Article 19, Clause 1, Subclause F. Okay, so this Article 19, Clause 1, Subclause F, it guarantees right to property. Okay, but this right to property, it was removed from Part 3 through 44th Amendment Act 1978. Okay, so it was removed from Part 3. Okay, Part 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम Part 3 by 44th Amendment Act 1978. Okay, और इसको इंट्रोड्यूस कहा गया, so it was added, or you can say introduced in Part 12. मतलब फंडामेंटल राइट्स हटा के से पार्ट 12 में ऐड कर दिया गया था, और इसे क्या बना दिया गया?
इसे फंडामेंटल राइट हटा के से लीगल राइट बना दिया गया, दैट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज लीगल राइट ऑफ द सिटीजन. ओके, अंडर आर्टिकल 300A. So this question can be asked, okay, that right to property is still a fundamental right to the citizen of India. So no, right to property is not a fundamental right. It is a legal right. It was removed from Part 3 by 44th Amendment Act 1978 and added in Part 12 as a legal right under Article 300A. Okay, so this is Article 19 Clause 1F. So this is a very important, you can say, information that you should know, that right to property. अभी जैसे हम लोग देख, we can see that हम लोग देखते हैं जैसे कभी किसी भी सिटी में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे अभी अयोध्या का हम लोग देख रहे थे इन द न्यूज, वी हैव सीन कि देयर यूपी गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे घरे को जहाँ पे नोटिस भेज दिया गया है कि you should vacate within this time period because there will be a development project will be going on. So this kind of news we frequently see कि किसी भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर करती है बाय कंपनसेटिंग देम. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जाती है और कि अब ये घर हमारा नहीं, बट कंपनसेट करती है, बट दे कैन नॉट go in the Supreme Court and they will say that see, my fundamental right is getting violated. Okay, why? Because this right to property is removed from fundamental rights and now it is a legal right. Okay, or you can say it is a constitutional right. Okay, so this is what Article 19, Clause 1, Subclause F. We will see another article under 19, Article 19, Clause 1, Subclause Z. And what is this? So it is fundamental right to profession. Okay, so guarantees right to profession, fundamental right to profession or ट्रेड ऑफ वंस चॉइस. आप बिजनेस कर सकते हो, आप कुछ ट्रेड कर सकते हो, बट इस पे भी क्या है, इस फंडामेंटल राइट पे स्टेट इंपोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शन. अब जैसे रेस्ट्रिक्शन क्या इंपोज करेगी, सपोज यू वांट टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर और अ मेडिसिन, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या इंपोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शन, दे कैन make a license that if you want to practice a license you should sorry, if you want to practice medicine you must have an MBBS degree. ओके, तो वहां पे क्वालिफिकेशन डाल सकती है. या फिर आप कुछ हजारदस केमिकल फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो वहां पे गवर्नमेंट लाइसेंस रख सकती है कि यू मस्ट हैव दिस लाइसेंस. सो सर्टेन काइंड ऑफ restriction government can impose, okay, in the form of license or qualification in public interest. Okay, so this is what Article 19 Clause 1 Subclause G. So these are the fundamental rights. So total we have seen 7. Okay, हमने बात किया था 6 का, that under Article 19 it guarantees 6 fundamental right, but we have seen total 7. 19 Clause 1 A B C, okay, right, D E F G. And why 7? Because right to property was a fundamental right, but it was removed from Part 3 1978. Okay, so these are the fundamental rights which is guaranteed under Article 19. Okay, now we will see Article 20. Okay, so let's go with the Article 20. What is Article 20? Okay, so Article 20 is, it is a fundamental right against conviction. Okay, so the title of Article 20 is fundamental right against conviction. Conviction मतलब क्या कि किसी भी person को, like when they do some crime or someone is miscorrectly caught or catched by the police person, whether he was involved or not. Okay, so but they are still detained by the people. So in that case we have a fundamental rights against conviction which is guaranteed under Article 20, and one by one we will see what are the provision. Okay, so we will start with Article 20 subclause, sorry, Article 20 clause 1. Okay, what is Article 20 clause 1? So it prohibits the state, it prohibits a state from enacting ex post facto criminal legislation. अब यहाँ पे you might have this question that what is this ex post facto criminal legislation? ये क्या है? What is this ex post facto criminal legislation?
तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन कहने का मतलब कि कोई भी इंसान, नो मैन shall be convicted and sentenced for an act which was not a criminal act. ओके, अब सपोज करो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक सिली सा एग्जांपल, सपोज आपने कहीं पे रॉबरी की, ओके, या कहीं पे चोरी की, एंड सपोज उस कंट्री में रॉबरी या चोरी, वहां पे एक लेजिस्लेशन नहीं था, एक कानून नहीं था कि इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, ओके, वहां पे उसे क्रिमिनल एक्ट कंसीडर नहीं किया जाता था, बट पुलिस ने क्या किया, आपको काउट कर लिया, कैच कर लिया, ओके, तो आपको पुलिस ने जिस टाइम काउट किया उस टाइम पे ये लेजिस्लेशन, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं था, उसके बाद भले ही वो लेजिस्लेशन आ जाए, वो एज ए क्रिमिनल एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू पास हो जाए, बट आपको जिस टाइम पे काउट किया गया उस टाइम पे क्रिमिनल लेजिस्लेशन नहीं था, तो इसी वजह से क्या हुआ कि आपके ऊपर उस लॉ का कोई भी असर, मतलब उस पे आपके उस लॉ के अकॉर्डिंग आप पे जजमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देयर वाज अ नीट पेपर लीक स्कैम व्हिच हैपेंड इन आवर कंट्री, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को पुलिस ने काउट किया है, ओके, और फिर क्या हुआ, दे दे हैव काउट दोज पर्सन, बट क्राइम क्या हुई थी, दैट क्राइम वाज डन ऑन 5th of May, एंड आफ्टर सम डे गवर्नमेंट ने जो पेपर लीक का कानून जो पास किया था उसको एक्ट में लाया, ओके, तो अब जब एक्ट में लाया तो वो एक्ट बना क्राइम होने के बाद, तो अब अगर सपोज करो जो भी लोग पकड़े गए हैं, इफ दे फाउंड दैट दे वर गिल्टी, दे वर इन्वॉल्व, तो उनपे जो कार्रवाई होगी वो नए एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो जो पुराना एक्ट था उसके अकॉर्डिंग ही होगी। सो दिस इज व्हाट एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, दैट इट प्रोहिबिट स्टेट्स फ्रॉम इनेक्टिंग एक्स पोस्ट क्रिमिनल लेजिस्लेशन, दैट इज, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज नो मैन shall be convicted and sentenced for an act which was not a criminal act, which was not a criminal act at the time of commissioning, ओके, तो जिस टाइम उसने वो एक्ट किया उस टाइम पे वो क्रिमिनल एक्ट नहीं था, सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ विच वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आपको उसके अकॉर्डिंग जजमेंट देना होगा, आपको नए कानून के अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं देना होगा, ओके। नाउ आर्टिकल, this was article 20 clause 1, now we will see article 20 subclause 2, okay, so article 20 clause, sorry, not subclause, article 20 clause 2, okay, so what is this, so it prohibits double jeopardy. Okay, so what is the meaning of this double jeopardy? So it means that no person shall be punished more than once in a court of law for committing of a single offense. Okay, मतलब अगर किसी ने कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है, किसी ने भी कोई यू नो हैज कमीशन सम क्रिमिनल एक्ट, सो उस पर्सन को एक बार से ज्यादा सजा उस क्राइम के लिए नहीं दिया जाएगा। ओके, सपोज किसी ने चोरी की, ओके, सपोज सम पर्सन हैज डन थेफ्ट, ओके, तो उसे कोर्ट में ऑलरेडी सजा मिल गई है, अब कोई दूसरी बार उसे उसी सेम चोरी के लिए सजा नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट prohibits double jeopardy, that is no person shall be punished more than once in a court of law for committing of single offense, okay, so that is no person shall be punished more than once in a court of law, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर कमिशनिंग ऑफ अ सिंगल ऑफेंस, ओके, उसी सेम ऑफेंस के लिए जिसके लिए ऑलरेडी उसे सजा मिल चुकी है, उसी सेम ऑफेंस, उसी सेम क्रिमिनल एक्ट के लिए उसे फिर से सजा नहीं, मतलब सेम चोरी किया है तो उसी चोरी के लिए उसे दोबारा सजा नहीं मिलेगी। ओके, दिस इज वाज आर्टिकल 20 clause 2, now we will see article 20 clause 3, okay, so what is this 20 clause 3, so no person
can be forced to give self incriminating evidence, और सिंपल वर्ड में कहे तो नो पर्सन कैन बी फोर्स टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिज ओन सेल्फ। ओके, मतलब अपने खिलाफ खुद वो गवाही नहीं दे सकता, वेदर ही इज गिल्टी और नॉट, no person can be forced to give evidence against his own self. Okay, so no person can be forced to give evidence against his own self. Okay, so this is what article 20 clause 3. So these are the these are the clause of article 20 which is under article 20, clause 1, clause 2, clause 3, and this is what it is, a fundamental right against conviction. अब conviction के लिए different clauses हैं, like ex post facto criminal legislation, that is no person shall be convicted or sentenced for an act which was not a criminal act at the time of commissioning, and then prohibit double jeopardy, and last, no person can be forced to give evidence against his own self. Okay, now we will see article 21. Okay, which is what? Right to life and personal liberty. Okay, so right to life and personal liberty is guaranteed under article 21. So what it guarantees? So it guarantees right to life and personal liberty. ओके, एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आर्टिकल 21 को लेके? ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 21 डज नॉट गारंटी राइट टू लाइफ, ओके, रैदर इट गारंटीज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। सुप्रीम कोर्ट का कहना का मतलब है कि सिर्फ राइट टू लाइफ गारंटी नहीं है, रैदर इट इज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, मतलब एक अच्छा लाइफ, ओके, डिग्निफाइड लाइफ। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है फॉर आर्टिकल 28। ओके, कोर्ट ने कहा और ओके कि जो आर्टिकल 21 है, द आर्टिकल 21, इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल राइट, ये सिर्फ एक सिंगल राइट नहीं है कि राइट टू लाइफ इज जस्ट अ सिंगल लाइफ राइट, ओके, रैदर इट इज अ कंपोजिट राइट which include different rights under it. Okay, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट? ओके, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट दैट आर्टिकल 21 is not a single right. Okay, rather a composite right which includes different right under it, okay, which includes different right, and what are those rights? So I am just writing here. Okay, so what are those right? So like right to have and change name, so right to, okay, right to have and change name, this is another right which is under article right to life and personal liberty. Okay, and then change name, right to have change name and surname. Okay, second क्या है? तो राइट टू प्राइवेसी, दिस इज ऑल्सो गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। अभी रिसेंटली हमने द हिंदू में एक न्यूज पढ़ा था दैट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन जजमेंट दैट राइट टू बेल इज ऑल्सो गारंटीड अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हम लोग यहाँ पे उसे भी लिख सकते हैं राइट टू बेल। ओके, राइट टू बेल इज ऑल्सो अ fundamental right which is guaranteed under article 21, that is right to life and personal liberty. So this is current affair, you can see. Okay, so right to bail, right to access internet, तो ये सब क्या है? ये सब एक डिग्निफाइड लाइफ का एक प्रोविजन हम लोग कह सकते हैं। ओके, राइट टू रिलेशनशिप, हम लोग रिलेशनशिप किसी के साथ रख सकते हैं, we can be in relationship, so right to relationship also a fundamental right. Right to choose sexual partner is also a fundamental right. Okay, right against
corruption free administration, this is also guaranteed under article 21. Okay, right to reputation, right to reputation, then right to clean environment. Okay, clean environment भी हमारा fundamental right है, we can sue anyone if someone is polluting our environment in Supreme Court. Right to speedy and fair trial, this is also a fundamental right. Okay, speedy and fair trial. Okay, and right against cruel punishment. So these are all the rights which is, you can say, under article 21. These all rights are guaranteed under article 21. Okay, so this was what Supreme Court observation. Supreme Court told that सबसे पहले कि राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट राइट टू लाइफ. ओके, सिर्फ सिंपल लाइफ नहीं है. राइट टू लाइफ इट मीन्स राइट टू डिग्निफाइड लाइफ. एंड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जो आर्टिकल 21 है, इट इज नॉट जस्ट अ सिंगल राइट. ये सिर्फ सिंगल राइट नहीं है, बल्कि इट इज अ कंपोजिट राइट जो कि इंक्लूड करता है डिफरेंट राइट्स. एंड व्हाट आर दोस राइट? राइट टू हैव सेक्सुअल पार्टनर, राइट टू हैव रिलेशनशिप, राइट टू बेल, राइट टू एक्सेस इंटरनेट. So these all are the rights which is guaranteed under Article 21. Okay, so therefore Article 21 क्या है? Therefore Article 21 brings out difference between police state and a constitutional state. तो ये क्लियरली डिपिक्ट करता है, क्लियरली डिफरेंस लाता है कि एक पुलिस स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में क्या डिफरेंस है. अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट you have different rights. You are free to choose your partner. You are free to have internet. You have free to have speed and fair trial. So these all are rights guaranteed under constitutional state. But on the other side, if we see any police state, we can see what are the condition of people there. People cannot either speak freely. People do not have speed and fair trials. Okay, people cannot change their name or surname. So you can see in a police state. So therefore what Article 21 brings out difference between police state and a constitutional state. Okay, so therefore we can say Article 21, under Article 21 what we can say, that no person can be deprived of his life or personal liberty. हम लोग क्या कह सकते हैं? No person can be deprived of his life or personal liberty. But अब मान लो कोई पर्सन क्राइम कर दे, ओके, कुछ भी कर दे, तो वी हैव टू टेक दैट थिंग. वी हैव टू, जैसे मान लो देयर इज सम टेररिस्ट, और इन द पास्ट वी हैव सीन दैट बहुत लोगों को फांसी की सजा भी मिलती थी, ओके, फॉर द हीनियस क्राइम, okay, for like rape or anything else. So in that case government can took that fundamental right. Okay, so therefore no person can be deprived of his life or personal liberty, but government can took that according to procedure established by law. So we can write here, no person can be deprived of his life or personal liberty except according to, अगर हमें किसी का ये आर्टिकल छीनना, ये फंडामेंटल राइट लेना है, तो we have to go through the procedure established by law. Okay, now what is this procedure established by law? So I will write here p.e.bl for convenience. Okay, so now what is this procedure established by law? Okay, so we will understand this thing. So what is this procedure established by law? Okay, so this procedure established by law concept, it was actually originated in England. Okay, so this concept was originated in England. Okay, तो ये जो concept लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है, under which if a person is deprived of his life or liberty, okay, if a person is deprived of his life or liberty, then the court will examine on the following grounds. Okay, so under which
if a person is deprived of his life and liberty, ओके अगर किसी का मान लो कि गवर्नमेंट ने किसी का आर्टिकल 21 ले लिया है, ओके ओके, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोर्ट इंटरवीन करेगा और कोर्ट एग्जामिन करेगा, ओके, लाइफ और लिबर्टी, देन द कोर्ट्स विल एग्जामिन, और क्या एग्जामिन करेगा, सो फर्स्ट, ओके, फर्स्टली वो क्या एग्जामिन करेगा कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स उसका ले रहे हो, किसी भी पर्सन का आप लाइफ और लिबर्टी ले रहे हो, तो क्या उसके लिए कोई लॉ एग्जिस्टेंस है, वेदर देयर इज अ लॉ इन एग्जिस्टेंस which authorize the executive to deprive the individual of his life or a liberty, okay, क्या कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। सेकेंड, कोर्ट विल ऑल्सो सी कि वेदर द लॉ, अगर लॉ है, सपोज एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हाँ लॉ है, देयर इज अ लॉ, तो कोर्ट विल ऑल्सो सी वेदर द लॉ वाज पास्ड बाय कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर और नॉट, मतलब एक सही लेजिस्लेचर, एक अच्छे लेजिस्लेचर के थ्रू वो पास हुआ था या नहीं, और जो भी प्रोसीजर फॉलो किया गया था लॉ पास करने के लिए, वो करेक्टली फॉलो किया गया था या नहीं वाइल पासिंग द लॉ, ओके। So court will also see whether the law was passed by competent legislature or not, and where all the procedures correctly followed or not while passing the law. Okay, so let me just write you. So court will examine what? So whether there is a law in existence or not. Okay, whether there is law in existence which authorize the active executive to deprive the individual of life or liberty. So whether there is a law existence or not, we can simply write. And if there was a law, okay, so court will also see if there was a law, then court will also see whether the law was passed by competent legislature, okay, competent legislature or not, and all the procedures correctly followed or not while passing the law, ओके। तो कोर्ट क्या एग्जामिन करेगा, कोर्ट एग्जामिन सबसे पहले करेगा अगर किसी का आपने आर्टिकल 21 डिप्राइव किया, किसी को आपने आप लाइफ या उसके पर्सनल लिबर्टी से आपने डिप्राइव उसे किया है, तो कोर्ट एग्जामिन करेगा कि क्या कोई लॉ था या नहीं, ओके, whether the law was existence or not, and if the law was there, so court will see कि जो लॉ पास किया गया था वो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के थ्रू पास किया गया था या नहीं, और अगर पास किया गया तो वो करेक्टली जो प्रोसीजर दिया गया हुआ है लॉ पास करने के लिए वो फॉलो किया गया था या नहीं, ओके। इसमें क्या है, इसमें कोर्ट जो है ये सारा चीज एग्जामिन करेगा, लेकिन कोर्ट ये एग्जामिन नहीं करेगा कि लॉ फेयर था या नहीं, या जो मोटिव था लेजिस्लेचर का लॉ पास करने के बिहाइंड वो मोटिव कैसा था, ओके। सो कोर्ट क्या एग्जामिन नहीं करेगा, व्हाट कोर्ट विल नॉट एग्जामिन, सो कोर्ट विल नॉट एग्जामिन, ओके, कोर्ट विल नॉट एग्जामिन द फेयरनेस ऑफ लॉ, लॉ फेयर था या नहीं, मोटिव लेजिस्लेचर का, what was the motive behind the legislature behind passing the law, motive कैसा था, अच्छा था या नहीं, these all things will not be examined by the court, okay। So therefore ये जो प्रोसीजर established by law है, therefore procedure established by law extends protection, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट arbitrary एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी भी पर्सन ऑफ इंडिया को बिना किसी मतलब के
आर्टिकल 21 को डिप्राइव नहीं कर सकती, मतलब उसके लाइफ या उसके लिबर्टी को उससे डिप्राइव नहीं कर सकती है। अगर करती है तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू ही करेगी। ओके, सो अंडर विच कोर्ट विल एग्जामिन द मैटर, कोर्ट मैटर को एग्जामिन करेगा कि वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो दे विल सेट हिम फ्री, और उसका जो 21 डिप्राइव उसे किया गया था उसे वापस कर दिया जाएगा। इफ person was involved in any misdoing or anything, then there it can be deprived of his life or liberty. So therefore procedure established by law is what? It extends protection against arbitrary action of executive. ओके, एग्जीक्यूटिव के लिए ये आर्बिट्री एक्शन मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट यहाँ पे क्या है कि एंड नॉट दैट ऑफ लेजिस्लेचर, बट ये लेजिस्लेचर के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसी पीबीएल ओके प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के जगह पे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है, एंड दैट इज व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या था, ये इंग्लैंड से लिया गया था, बट ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड हुआ था कहाँ, ये यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था। ओके, तो दिस कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनेटेड इन यूएसए, और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये ग्रेटर पावर देता है जुडिशरी को, दिस गिव्स ग्रेटर पावर टू जुडिशरी। ओके, जिसमें क्या होगा, जिसमें जुडिशरी क्या करेगा, एग्जामिन करेगा लॉ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ओके, तो जिसमें कोई भी अगर पर्सन का डिप्राइव किया गया उसे आर्टिकल 21, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू इसको एग्जामिन करेगा, साथ ही साथ कोर्ट ये भी चेक करेगा कि जो लॉ था वो फेयर था या नहीं। तो देखो यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या हो रहा था कि कोर्ट एग्जामिन नहीं कर रहा था फेयरनेस ऑफ लॉ। ओके, कोर्ट वाज नॉट एग्जामिनिंग द फेयरनेस ऑफ लॉ कि फेयर था या नहीं था, मोटिव क्या था, मोटिव लेजिस्लेचर का क्या था पास करने के पीछे क्या नहीं था। बट ड्यू प्रोसेस लॉ में क्या है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू तो वो चेक करेगा, एग्जामिन करेगा कि सही था या नहीं था, साथ ही साथ वो क्या चेक करेगा कि लॉ इटसेल्फ फेयर था या नहीं। ओके, तो ग्रेटर पावर टू जुडिशरी टू एग्जामिन, ओके, टू एग्जामिन the law from the perspective of procedure established by law, as well as it will also check, as well as the court also checks the law itself is fair or not. Okay, itself is fair or not. So therefore ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है ये जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज legislature. Okay, so let me just copy it. Just a second. So therefore, so let me just write here. So therefore due process of law जो है, okay, therefore due process of law provides protection against arbitrary action of executive and as well of legislature and as well as of legislature. तो ये एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और लेजिस्लेचर के खिलाफ भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सो अंडर आर्टिकल 21 ये प्रोवाइड कर रहा था फॉर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के लिए। ओके, सो आर्टिकल 21 क्या प्रोवाइड कर रहा था, सॉरी 23 मैंने लिख दिया है, 21 आर्टिकल 21 क्या प्रोवाइड कर रहा था फॉर पीबीएल, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में क्या इंटरप्रेट किया, सो
कौन सा केस था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। तो ये इसको वी हैव टू रिमेम्बर। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट to include due process of law, okay, procedure established by law की जगह पे क्या करना है? We have to include the due process of law by reading principle of natural justice, okay, SC, to include ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी प्रोटेक्शन मिल रहा है और लेजिस्लेचर के खिलाफ भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो इंक्लूड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बाय रीडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, तो अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? तो मैं यहाँ पे शॉर्टली आप लोग को बता दूं। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? तो इसके कुछ 3 पॉइंट्स है। तो इसके 3 प्रिंसिपल हैं। ओके, व्हाट आर दोस 3 प्रिंसिपल? सो नो पर्सन शैल बी पनिश्ड, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड अनहियर्ड, बिना सुने हुए किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेकेंड इज no person, okay, no person can be judge of his own case। ओके, मतलब कोई भी इंसान, जैसे मान लो सम जज, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो वही जज अपने केस का खुद जज नहीं होगा। देयर विल बी अनदर पर्सन हु विल जजिंग हिज केस। तो नो पर्सन कैन बी जज ऑफ हिज ऑन केस एंड नो पर्सन, ओके, और यू कैन से authority shall act bona fide। ओके, कहने का मतलब हो गया कि अथॉरिटी शुड एक्ट इन गुड फेथ, दैट इज इन गुड फेथ। ओके, सो दिस आर द 3 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, और पर्पस क्या है इस प्रिंसिपल का? टू प्रिवेंट आर्बिट्री एक्शन बाय एनीवन। ओके, किसी के भी थ्रू, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, या इवन द कोर्ट इटसेल्फ, so it prevent arbitrary action by anyone। so this is what principle of natural justice। और इसी कारण क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, दिस इज व्हाट आर्टिकल 21। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दैट न्यू आर्टिकल was added and that is article 21, oh sorry, yeah, article 21A। ओके, और ये कब ऐड किया गया? ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? सो इट वाज एडेड थ्रू 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। सो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था। इस आर्टिकल में क्या है? अंडर विच स्टेट shall provide free and compulsory education to all the children, of age 6 to 14। तो ये क्या है? ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स हो गया टू चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 कि स्टेट उन्हें क्या करेगा? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो देयरफॉर क्या हो गया? कंपल्सरी एजुकेशन क्या हो गया? रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा किसका? स्टेट और पेरेंट्स का। सो देयरफॉर कंपल्सरी एजुकेशन जो है, ओके, दिस कंपल्सरी एजुकेशन, ये क्या हो गया? दिस इज, यू कैन से, रेस्पॉन्सिबिलिटी of state and parent, okay, for the age group of which children? From age group of 6 to 14। so therefore क्या हुआ? 86 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उस एक्ट में क्या किया गया? फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया अंडर आर्टिकल 51A clause 6। so therefore this responsibility of state and parents को क्या किया गया?
फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी बना गया, मेड फंडामेंटल ड्यूटी बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया ये आर्टिकल, और इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया पेरेंट्स और स्टेट का कि वो प्रोवाइड करे फ्री एजुकेशन। ओके, कंपल्सरी एजुकेशन टू एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। ओके, अमेंडमेंट एक्ट एंड added under article 51A clause K। Okay, so this is added as fundamental duty. What is that? That it is the responsibility of states and parents to provide free and compulsory education to all the children of age group 6 to 14। और आर्टिकल 21A के अंदर क्या हो गया, ये एक तुम्हारा फंडामेंटल राइट भी हो गया एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर ऑफ चिल्ड्रंस का। ओके, सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A क्या है, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, हमने देखा यहाँ पे 21 क्या है, और 21 कोई एक सिंगल राइट नहीं है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स व्हिच इंक्लूड आर्टिकल व्हिच इज अंडर आर्टिकल 21। ओके, एंड देन आर्टिकल 21 प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में बात करती है, एंड व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वी हैव सीन। ओके, देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, and then article 21A। now we will see article 22, article 22। okay, so what is this article 22? so article 22 क्या है, तो it provides protection। okay, provides protection against, or you can say provide protection, sorry, against या during arrest and detention। ओके, तो ये आर्टिकल 22 क्या है, ये तो बेसिकली प्रोवाइड प्रोटेक्शन जब कोई इंसान अरेस्ट हो रहा है या उसे डिटेन किया जा रहा है। तो देखो डिटेंशन जो है वो दो तरह का होता है। ओके, सो डिटेंशन क्या है, डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप। ओके, पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन। ओके, एंड अनदर वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है, सो it is to punish a person। okay, to punish a person for an offense committed by him, for an offense committed by him after trial। ओके, ट्रायल होने के बाद उसे पनिश किया जाएगा, आफ्टर ट्रायल और कन्विक्शन इन कोर्ट। अगर उसे कोर्ट में कन्विक्ट कर दिया गया कि हाँ ही वाज इन्वॉल्व और सी वाज इन्वॉल्व, जो भी है, ओके, कि दैट पर्सन वाज इन्वॉल्व इन द क्राइम, सो आफ्टर दैट कन्विक्शन, ओके, और आफ्टर द ट्रायल दैट पर्सन इज गोइंग टू बी पनिश्ड। okay, so this is what punitive detention। and what is preventive detention? so it means detention of a person विदाउट ट्रायल। ओके, किसी पर्सन को आपने डिटेन कर दिया विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट, बिना कन्विक्ट किए हुए, बिना कोई कन्विक्शन के कोर्ट में हुआ या ट्रायल के बिना आपने उसे क्या किया, डिटेन किया हुआ है। ओके, और ये क्यों किया जाता है, सो यू कैन सिंपली से प्रिवेंटिव डिटेंशन इज व्हाट, इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर। ओके, ये क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर है, प्रिकॉशनरी मेजर एंड बेस्ड ऑन सस्पिशन। अगर मान लो स्टेट को, ओके, स्टेट को उन्हें सस्पिशन हुआ, ओके, जैसे अभी नीट का मामला हमने देखा, बहुत लोगों को पुलिस ने क्या किया है, अरेस्ट किया गया है, बट उनके खिलाफ अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, तो दे आर अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। ओके, कि पुलिस को शक है कि दैट दीज पीपल आर इन्वॉल्व। अगर ये कन्विक्ट होते तो उनके खिलाफ प्यूनिटिव डिटेंशन किया जाएगा, बट अभी क्या है, दे आर प्रिवेंटिव डिटेंशन, दैट दे आर
डिटेन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, बेस्ड ऑन सस्पिशन। ओके, तो इसी में इसी डिटेंशन को लेके एक अमेंडमेंट है, देयर वाज 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था ऑफ 1978। इसमें क्या हुआ था कि जो पीरियड था डिटेंशन का, ओके, जो पीरियड था डिटेंशन का प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में, वो 3 मंथ्स का था, बट उसे क्या किया गया, रिड्यूस कर दिया गया, रिड्यूस टू 2 मंथ्स। ओके, रिड्यूस फ्रॉम 3 मंथ्स टू 2 मंथ। बट अभी तक क्या है, इस प्रोविजन को फोर्स में नहीं लाया गया है। ओके, दिस यू कैन सिंपली राइट कि हैज नॉट येट बीन ब्राउड, हैज नॉट येट बीन ब्राउड। तो अभी तक क्या है, अभी तक आपका जो 90 डेज है आपका वही है। ओके, 3 मंथ्स, हैज नॉट येट बीन ब्राउड। अगर किसी को भी आप डिटेन करते हो तो आप 90 दिन तक उसे रख सकते हो, 90 डेज तक आप उसे रख सकते हो, बट आफ्टर 90 डेज आइदर यू हैव टू ट्रायल अगेंस्ट हिम, चार्जशीट फाइल करना होगा एंड ऑल एंड, बट अगर आपको कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, देन यू हैव टू सेट अप हिम फ्री। ओके, 90 डेज के बाद he has the fundamental rights of right to bail. Okay, so this was a, you can say this was recently a current affair, supreme court का ही judgment था अभी recently, the hindu में एक article था उसके related, so the person has right to bail if he has fulfilled the term of 90 days in the jail. Okay, अगर वो 90 days से ज्यादा उसका detention हो गया है तो he can sort for his bail. ओके, जिसको हम लोग इंटरिम बेल भी कहते हैं। 90 डेज बाद उसे बेल मिल गया एंड आफ्टर दैट पुलिस को कुछ एविडेंस मिलता है, पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, तो फिर उसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हो गया एंड आफ्टर कन्विक्शन ही विल बी पनिश्ड। और अगर कन्विक्शन, अगर ट्रायल में उसे बेगुनाह साबित हो गया दैट ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन दैट क्राइम, सो ही विल बी अगेन सेट फ्री। ओके, सो दिस इज व्हाट डिटेंशन। सो आर्टिकल 22 क्या है, तो आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। एंड व्हाट इज दिस डिटेंशन वी सी, तो अब जो प्रोटेक्शन है, सो 3 प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। ओके, देयर आर 3 प्रोटेक्शन। ओके, सो 3 प्रोटेक्शन है, देयर आर 3 प्रोटेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22। तो वो क्या क्या है, वी विल सी। सबसे पहले क्या है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन shall be kept in a custody. ओके, किसी भी पर्सन को आपने अरेस्ट किया या डिटेन किया है तो उसे कस्टडी में आप नहीं रखेंगे विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ द रीजन ऑफ अरेस्ट। मतलब किसी पर्सन को तुमने अरेस्ट किया और उसको कस्टडी में रख लिया है, लेकिन आप उसे बता नहीं रहे हो किस वजह से है, तो जब तक आप उसे बताओगे नहीं कि रीजन ऑफ उसका अरेस्ट क्या है, उसको आप तब तक आप क्या कर सकते हो, कस्टडी में नहीं रख सकते हो। और साथ ही साथ उसे लॉयर उसके पसंद का चॉइस करने का भी प्रोटेक्शन दिया गया है, फ्रीडम है कि ही विल कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। तो वो अपने खिलाफ, वो अपने लिए, सॉरी खिलाफ नहीं, वो अपने लिए लॉयर भी वो चूज कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू इन्फॉर्म हिज फ्रेंड्स, फैमिली और एनी नोन पर्सन अबाउट हिज अरेस्ट। मतलब अगर आपने किसी को अरेस्ट किया या डिटेन किया है तो उस पर्सन का वो राइट है कि वो अपने किसी भी नोन वन को वो इन्फॉर्म करेगा कि दैट ही इज अरेस्टेड। ओके, सेकेंड क्या है कि ही कैन कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। और थर्ड थिंग इज व्हाट कि यू हैव टू इन्फॉर्म हिम द रीजन ऑफ अरेस्ट। तो 3 प्रोटेक्शन क्या है, तो पहला प्रोटेक्शन में क्या है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड or detained, you can say, shall be kept in custody, shall be kept in custody without informing him the reason, without informing him the reason of arrest, him the reason of arrest. Okay, और साथ ही साथ क्या है इसी में कि he shall be entitled to consult a lawyer ऑफ हिज ओन चॉइस। मतलब पुलिस नहीं देगा उसे लॉयर कि हाँ ये लो, तुम ये लॉयर रख लो, नहीं, ही इज इंटाइटल्ड टू कंसल्ट एनी लॉयर ऑफ हिज चॉइस, ही शैल बी इंटाइटल्ड टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। और थर्ड इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट अरेस्टेड पर्सन अकॉर्डिंग टू एससी, आई विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अरेस्टेड पर्सन
हैज द राइट टू इन्फॉर्म हिज नोन वन में कोई भी आ गया, रिलेटिव आ गए, फ्रेंड्स आ गए, फैमिली हो गए, हिज नोन वन अबाउट हिज अरेस्ट। तो ये आपको करना होगा अगर आपने आपने किसी को भी अरेस्ट किया है। ओके, प्रोटेक्शन क्या है, थ्री प्रोटेक्शन क्या है कि अगर इफ एनी पर्सन इज अरेस्टेड, तो सबसे पहले अगर आप उसको कस्टडी में रखते हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म हिम। अगर आप उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो कि व्हाट इज द रीजन, यू कैन नॉट केप्ट हिम इन कस्टडी। सेकंड थिंग सेकंड थिंग इज व्हाट, ही शैल एंटाइटल टू कंसल्ट अ लॉयर। एंड थर्ड थिंग इज he ha he has the right to inform his known one about his arrest. ओके, सेकंड क्या हो गया, ओके थ्री, ये पहला प्रोटेक्शन था। नाउ वी विल सी द सेकंड प्रोटेक्शन कि अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट करो, इफ यू आर अरेस्टिंग सम पर्सन, तो ही शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। मतलब 24 घंटा के अंदर में आपको जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उसके सामने आपको उसे प्रोड्यूस करना, प्रेजेंट करना। ओके, सो अरेस्टेड पर्सन shall be produced before the nearest judicial magistrate. Okay, judicial magistrate within 24 hours of arrest. तो 24 घंटा के अंदर में आपको उसको क्या करना है, पेश करना है कोर्ट के सामने में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने में। ओके, एंड द थर्ड प्रोटेक्शन इज व्हाट, कि किसी नो पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड विच वाज ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। मान लो मजिस्ट्रेट ने कहा कि यू हैव टू कीप हिम फॉर 2 days। ओके, तो आप उसे 2 दिन तक ही आप उसे डिटेन करके रखोगे। यू कैन नॉट एक्सटेंड हिज कस्टडी विदाउट हैविंग द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो 2 दिन से ज्यादा आप उसकी कस्टडी नहीं रख सकते। अगर आपको उसकी कस्टडी रखना है तो आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, सो नो person shall be detained in custody beyond the period which was authorized by magistrate। ओके, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद आप 24 घंटा के अंदर में लेके जाओगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहता है ओके यू जस्ट टेक हिज कस्टडी फॉर 3 days और 4 days, तो आप उसे 4 days के लिए ही कस्टडी में रखोगे। यू कैन नॉट एक्सटेंड हिज कस्टडी। ओके, अब ये जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 22, तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन उन्हीं को ही मिलेगा हु इज डिटेन अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन। ओके, उन्हें जो प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर है उन्हें ये प्रोटेक्शन मिलेगा, बट इट इज नॉट अवेलेबल। ये क्या है, ये नहीं अवेलेबल, इट इज नॉट अवेलेबल पीपल अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर में जिन्हें अरेस्ट किया गया है, या कह सकते हो एनिमी एलियंस। ओके, एनिमी एलियंस कहने का मतलब होगा कोई भी टेररिस्ट, अब कोई भी टेररिस्ट अगर कोई क्राइम करता है यहाँ पे, तो आप उन्हें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे। ओके, दिस प्रोवाइड नहीं करोगे मतलब ये प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगा ही नहीं। दिस प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल टू देम हु इज बुक्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और हु इज अ एनिमी aliens। Okay, so these are the protection which is provided under article 22। okay, so what is article 22? Provide protection during arrest and detention। now we will see article 23। okay, so article 23 clause 1, and what is this article 23 clause 1? so it prohibits traffic in human beings, और traffic in human beings कहने क्या मतलब है, in the form of beggar or any other form of forced labor। तो ये क्या करता है, prohibits करता है traffic in human beings। आप human being का trafficking नहीं कर सकते, you can not do trafficking of human being, और forced labor भी आप इसके नहीं कर सकते हो। okay, traffic in human beings, beggars or any other form of forced labor, any other form of forced labor। so I will write here FL means forced labor। okay, so 21 what 23 clause 1 what it's guarantees, so it is actually providing the fundamental rights to any citizen if he is forced
if anyone is forcing for him for any kind of labor, any kind of work, so he has the fundamental rights that he will book that person under the violation of fundamental rights. Okay, अगर कोई भी इंसान उसे फोर्सफुली वो काम करवा रहा है तो ही इज इंटाइटल टू बुक चार्जेस अगेंस्ट दैट पर्सन बिकॉज ही इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट क्या है? तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर और प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और बेगर्स. तो आप किसी से जबरदस्ती भीख भी नहीं मंगवा सकते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 23 क्लॉज 1. नाउ आर्टिकल 23 क्लॉज 2. तो आर्टिकल 23 के अंदर में दो क्लॉजेज आते हैं, 23 क्लॉज 1 एंड 23 क्लॉज 2. ओके, तो इसमें क्या है? अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स लेबर के बारे में दिया गया है. ओके, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 क्या कहता है कि ये एम्पावर करता है स्टेट को, ओके, कि ये कंपेल कर सकता है इंडिविजुअल को, मतलब सिंपल समझो, इट कैन फोर्स टू एनी इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सर्विसेज विथ और विदाउट पेमेंट. मतलब आप पेमेंट के साथ या बिना पेमेंट के भी आपको वो सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, until and unless that सर्विस इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट. तो मान लो कोई भी सर्विस है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये कंपेल कर सकता है कि दैट यू हैव टू प्रोवाइड दैट सर्विस, आइदर टेक द पेमेंट और नॉट टेक द पेमेंट, बट यू हैव टू प्रोवाइड दैट सर्विस बिकॉज दैट सर्विस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, तो empowers the state to compel the individual to provide services, with or without payment. Okay, विद और विदाउट पेमेंट, प्रोवाइडेड कि जो सर्विस है, प्रोवाइडेड इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तब, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो यू कैन नॉट कंपेल, यू कैन नॉट फोर्स दैट इंडिविजुअल. ओके, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है, जैसे कोविड के टाइम में हमने देखा है दैट गवर्नमेंट वेयर कीपिंग वेयर फोर्सिंग द ऑर्गेनाइजेशन to do that because those services were in the public interest. Okay, now we will see another article, that is article 24. Okay, so what is article 24? So article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 in hazardous employment. तो ये child labor prohibit करता है. Okay, so it prohibits the employment of children below the age of 14 in hazardous employment. ओके, तो बट हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ढाबा पे या बहुत सारे ऐसे कंपनी में हमने देखा है कि बहुत सारे चाइल्ड जो हैं, ओके, जैसे हमने चाइल्ड आर्टिस्ट ही देखा है, दे आर वर्किंग. ओके, बट यहाँ पे क्या है, इट इज प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. तो हाउ दे आर वर्किंग? सो फॉर दैट पर्पस देयर इज एक्ट, दैट इज चाइल्ड लेवल प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016. और ये जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है कि चाइल्ड लेस देन 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड. ओके, वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता है एनीवेयर एक्सेप्ट फैमिली इंटरप्राइजेस. अगर फैमिली का कोई अपना बिजनेस है, या जैसे सपोज करो देयर इज अ 13 ईयर बॉय, ओके, और उसके फादर का चाय का दुकान है, ओके, तो ही कैन एम्प्लॉय देयर, और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो काम कर सकता है. ओके, सो एज पर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि चाइल्ड लेस देन 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, नहीं हो सकता है. बट यहां पे क्या है, एक्सेप्ट
फैमिली एंटरप्राइजेस और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म्स, मूवीज, वेब सीरीज में द चाइल्ड कैन वर्क बिलो द एज ऑफ 14। और इसमें और साथ ही क्या है कि चिल्ड्रन ऑफ एज 14 to 18 same cannot work in hazardous employment, cannot work in hazardous employment। ओके, कोई भी hazardous employment में वो काम नहीं कर सकता है। दिस इज व्हाट आर्टिकल 24। ओके, सो 24 क्या है? तो बेसिकली इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन hazardous employment। ओके, now we will see article 25। okay, so what is article 25? So it guarantees to all individual twofold fundamental rights to religion। so article 25 क्या है? तो article 25 is just the fundamental rights of religion, okay, to practice any religion। तो guarantees to all individuals twofold of fundamental rights to religion। और twofold क्या है? what is this twofold? तो twofold है सबसे पहला right to conscience। तो राइट टू कंसाइंस कहने का क्या मतलब हो गया कि मतलब फ्रीडम ऑफ एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम। ओके, इट मींस एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ। मतलब उसे अपना रिलीजियस बिलीफ या फेथ जो भी है उसका उसका वो अपना इनर फ्रीडम है। ओके, सो दैट इज व्हाट राइट टू कंसाइंस मींस, एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम, absolute inner freedom of an individual to mold his religious belief, to mold his religious belief and faith। so this is what first fold of fundamental right, that is right to conscience, that is absolute freedom, inner freedom of an individual to mold his religious belief and faith। okay, and then what is another one? so another one is right to profess, practice, propagate। okay, right to profess, practice and propagate a religion of one's choice। तो right to profess कहने का क्या मतलब हो गया? right to profess कहने का मतलब हुआ, okay, what is the meaning of right to profess? so इसका मतलब हुआ कि right to spell out one's religious belief freely and openly। मतलब अपने religion के बारे में अपने जो भी religious thought है, okay, you can spell out your religious belief freely and openly। हम लोग देखते हैं बहुत सारा धर्म सभा लगता है। ओके, वी सी मेनी प्लेसेस देयर आर धर्म सभा जहां पे लोग अपने रिलीजियस बिलीफ के बारे में बता रहे हैं, स्पेल आउट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट राइट टू प्रोफेस। ओके, टू स्पेल आउट वंस रिलीजियस बिलीफ फ्रीली एंड ओपनली, मतलब फ्री होके आप अपना कह सकते हो। एंड व्हाट इज प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का मतलब सिंपल सा है, राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू फॉलो द रिचुअल्स प्रेस्क्राइब बाय हिज रिलीजन। ओके, तो जो भी उसके रिलीजन में, जैसे आप हिंदू धर्म को देखोगे तो बहुत टाइम पे क्या होता है, जब फेस्टिवल्स कुछ आते हैं तो हवन होते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज अ प्रैक्टिस दैट दे आर फॉलोइंग। सो राइट of individual to follow the rituals prescribed by his religion and display the symbols and the sign associated with the religion। so that is what practice होता है, अपने religion को practice करना। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं। ओके, so right, so they display, they practice their religion। and right to propagate का मतलब क्या हो गया? मतलब spread करना religion को, simply to spread one's religion, right? so this is what right to profess, practice and propagate। अब इसी को लेके ओके, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके एक बहुत ही फेमस केस है। ओके, केस क्या है? फादर स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य
प्रदेश केस, और ये कब का है, ये 1977 में का है। ओके, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, okay, what Supreme Court has told, the Supreme Court held that fundamental right of a person to spread or transmit his religion, okay, by explaining the content cannot be questioned. Okay, मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि जो फंडामेंटल राइट है पर्सन का, वो क्या स्प्रेड कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है अपना रिलीजन, और उसके रिलीजन का जो भी कंटेंट है उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि वो अपने कंटेंट को क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, what explanation of the content he is giving to the person, that cannot be questioned. Okay, or even there is fundamental rights to convert others to one's own religion, मतलब conversion of religion भी fundamental right, अगर किसी को वो convert कर रहा है and that person is willingly to convert into that, so that is what fundamental right. Okay, so in the case of faith and belief, fundamental rights enjoyed by the individual is absolute, वो completely absolute है। सिंपल सा अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो SC held that fundamental rights enjoyed by the individual on the matter of faith and belief, on the matter of faith and belief is absolute. बट इन केस ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिस, स्टेट वहां पे रेगुलेट कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं दशहरा में, दशहरा में क्या होता है, जब दुर्गा प्रतिमा को भसान के लिए लेके जाया जाता है तो बहुत जगह पर हम लोग देखते हैं कि अखाड़ा होता है और दे डिस्प्ले द वेपन्स। ओके, तो उन केसेस में क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जगह पर हम देखते हैं गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो कुछ कंडीशन रेगुलेट करती है कि हाँ आपको वेपन डिस्प्ले नहीं करना है, यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज अखाड़ा। व्हाई? बिकॉज इन द पब्लिक इंटरेस्ट कि कोई न्यूसेंस ना हो। ओके, बट कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिस, but in case of conduct and practice, state can regulate it. Okay, so this is what article 25. Okay, now article 26 we will see, again it is related to religion. Okay, because 25 से अभी क्या है, 25 से 28 तक we have a right to freedom of religion. Okay, so article, sorry, this was article 25, yeah, article 26. So what is article 26? So article 26 deals with the freedom of religious denomination to manage its religious affairs. Okay, so deals with freedom of a religious denomination कह लो या institution कह लो, religious denomination to manage its religious affairs. Okay, to manage its religious affairs. Okay, and it also allow, और ये साथ ही साथ क्या allow करता है, allow the institution to own and acquire property. तो ये religious institution acquire भी कर सकते हैं property को, as well as establish and administer religious institution, religious या charitable institution. Okay, so this is what guaranteed under article 21, deals with religious freedom of religious denomination to manage its religious affairs. Okay, so this is what article 26. Now we will see article 27. Okay, so आर्टिकल 27 जो है ये इंडिया का जो सेकुलर नेचर है उसको ट्रूली ये ब्रिंग्स आउट करता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 27 क्या कर रहा है, इट इज प्रोहिबिटिंग द स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन, जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियस डेनोमिनेशन। ओके, तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज इन द करेंट सिनेरियो वी सी दैट मोस्ट ऑफ पीपल से दैट बीजेपी इज अ हिंदू पार्टी। सो इवन दो इट इज अ हिंदू पार्टी, अगर ऐसा मान भी ले कि हाँ इट इज अ हिंदू पार्टी, even though they cannot spend any tax amount, any expenditure of their fund, considered CFI, Consolidated Fund of India, on promoting any Hinduism
or any Hindu practice, okay, or in building any Hindu temple, okay, they cannot do that. अगर उन्हें करना है तो they have to do for all the religion that is existing in India. अगर उन्हें स्पेंड करना है टैक्स अमाउंट जो भी कलेक्ट हुआ है वो for the religion, so they have to do for all the religion that is in India. सिर्फ एक रिलीजन के लिए वो नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट इट डिपिक्ट्स और इट ब्रिंग्स आउट द ट्रू सेक्युलर नेचर ऑफ इंडिया, दिस आर्टिकल 27. तो 27 क्या कह रहा है कि इट इज प्रोहिबिटिंग, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम स्पेंडिंग टैक्स कलेक्शन फॉर द प्रमोशन and maintenance of any particular religious denomination. Okay, so it is prohibiting the state, right? Now in this there is another article related to religion, that is article 28. Okay, so what article 28 say? So article 28 deals with the instruction, okay, deals with the religious instruction in educational institution. Okay, article 28 क्या? article 28 deal करता है religious instruction in educational institution. और साथ ही साथ क्या कर रहा है 28 article 28 categorize कर रहा है educational institution को 4 categories में. Okay, so article 28 क्या है? तो deals with religious instruction in educational institution, deals with religious instruction in educational institution, categorizing एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है मैं EI से रेफर करूंगा. EI कैटेगराइजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन 4 कैटेगरीज. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. तो वो 4 कैटेगरीज क्या है? तो सबसे पहला कैटेगरी आई विल राइट हियर, फर्स्ट कैटेगरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली ऑन्ड. ओके, कंप्लीटली लिख देता हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्लीटली ऑन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट. ओके, तो पहला कैटेगरी ये हो गया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा वो कंप्लीटली ऑन एंड एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट. मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स. ओके, एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल. दूसरा हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेटली ऑन्ड. प्राइवेटली ऑन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड, बट यहां पे क्या है? बट जो फंड मिल रहा है बट एडेड बाय स्टेट. प्राइवेटली ऑन्ड है बट एडेड बाय स्टेट. थर्ड क्या हो गया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेटली ऑन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बट अनएडेड, मतलब स्टेट के थ्रू कुछ भी एड नहीं है बाय स्टेट बट अनएडेड बाय स्टेट. और चौथा हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन administered by state but established through religious endowment or charitable trust. Established through religious endowment और ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट. ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का. ओके, और ये क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है? तो देखो सबसे पहला इन द फर्स्ट कैटेगरी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन. ओके, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन हियर. यहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा. ओके, वेदर इट इज अ हिंदू कॉलेज और मुस्लिम कॉलेज, एनीवन एनीथिंग, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ओके, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा. However, in the second and third, क्योंकि सेकंड थर्ड में क्या प्राइवेटली ऑन्ड है,
एक में एडेड बाय स्टेट हो रहा है, एक में अनएडेड बाय स्टेट हो रहा है. ओके, सो हाउएवर इन सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन, बट इसको आप कंपलसरी नहीं बना सकते स्टूडेंट के, बट कैन नॉट बी मेड कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स. तो इसमें क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी देयर, ओके, कैन बी देयर, बट क्या कह सकते हो उसे, कंपलसरी नहीं है, कंपल्सरी बट नॉट कंपल्सरी. ऑन द अदर हैंड फॉर द फोर्थ वन क्या है, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट स्टेब्लिश थ्रू क्या हुआ, रिलीजियस इंडोमेंट और ट्रस्ट में. ओके, सो इसमें क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन एंड कैन बी मेड कंपल्सरी. तो यहाँ पे क्या होगा, कैन बी मेड कंपल्सरी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी मेड कंपल्सरी. So this is what article 28. Okay, so these all three articles from 25 to 28. So these are the articles which are dealing with the religious part. Okay, like 25 talking with the freedom of religion, 26 is talking about managing its own religious affairs. Okay, right, acquiring property. 27 state को प्रोवाइड कर रहा है, it is making the truly secular nature of India, and 28 is dealing with the educational institution. Okay, now article 29. So article 29, so article 29 is for what, it is for the protection of interest of minorities. तो जो भी minorities हमारे कंट्री में, सो दिस आर्टिकल इज प्रोवाइडिंग देम प्रोटेक्शन. तो क्या क्या प्रोटेक्शन होगा, तो सबसे पहले उनका जो भी लैंग्वेज होगा, जो भी स्क्रिप्ट होगा, जो भी कल्चर होगा, वो प्रोटेक्ट किया जाएगा. ओके, किसी भी माइनॉरिटीज को किसी भी कॉलेज में, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा, right? So these are the you can say some protection can be given. Again, they can establish an administration educational institution. Okay, minorities education, जैसे हमने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, it is you can say they told that they are a minority educational institution, right? So similarly for that, so there are different clauses for this. So I like article 29 clause 1. तो ये क्या है, it provide protection. Okay, it provide fundamental right to conserve their unique language, right, script or culture. Okay, so therefore it is a protection of interest of minorities. Then article 29 clause 2. So what is article 29 clause 2? So no citizen shall be denied admission in any educational institution maintained by state or receiving aid out of state only on the basis of religion, race, caste or language. Okay, so no citizen, मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूँ, no citizen shall be denied admission in any educational, okay, any educational institution on the basis of religion, race, caste or language or any of them. Okay, so this is what article 29 clause 2. Now article 30 clause 1. So it makes a fundamental right for minorities to establish and administer their educational institution. So this is what, this is a fundamental right, मैंने आपको अभी बताया, fundamental right for minorities to establish and administer educational institutions. Okay, and then article 30 clause 1a. Okay, so in this there is fundamental rights given to the minority to have the right of property. Okay, with respect to educational institution. क्या है, fundamental right to property but with respect to educational institution. Okay, but state ले सकती है वो property, state can take over such a property
प्रोवाइडेड दैट दैट प्रॉपर्टीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और साथ ही साथ वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कंपनसेट कर रही है। ऐसे नहीं कि वो जाएगी और प्रॉपर्टी ले लेगी। गवर्नमेंट हैव टू कंपनसेट इट, एंड ऑल्सो दे हैव टू शो दैट दैट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तब। ओके, सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 1330 clause 1A. So we have studied till article 30 clause 1A. So for this lecture, guys, that's all. So we have complete almost all the fundamental rights, right? So in the next lecture, that is lecture 4, okay, and that will be the last lecture series for the fundamental rights. So in that lecture series, we will see article 32, that is right to constitutional remedies, okay, and different kinds of writ jurisdiction we are going to learn. So that will be the last lecture series in which we will complete all the fundamental rights, and I will also you can say give you the man maps or mnemonics, how to remember all these articles. So that's all. See you in the next lecture.